tract system. So this unit is about gastrointestinal tract. So basically we call it in short form GIT. So we are going to talk about GIT drugs, and we have laxatives here, bulk forming agents, osmotic laxatives, stool softeners, stimulant laxatives. Then we'll be talking about anti-diarrheal, anti-ulcer drugs, and this is all about gastrointestinal tract drug. So without any delay, let us start our GIT drugs. So GI system is a long tube through which the food passes. It commences at mouth and terminates at the anus. There are various groups of drugs acting on GIT at different level and exerts their pharmacological and clinical action. So the objective here is to understand different drugs used as laxatives in the treatment of constipation. Then we'll be talking about various diarrheal diseases, various drugs used in diarrhea and in peptic ulcer. First is laxative. These are the drugs which promote the evacuation of bowels and used in constipation. Number one is bulk forming agent. Number one is bulk forming agent. These contain natural or semi-synthetic hydrophilic colloidal derivatives of cellulose. These drugs act to increase the volume of stool by absorbing water. तो ये क्या करते हैं कि मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में अगर हम ये ड्रग देते हैं तो वो ये जो ड्रग है ये स्टूल का बल्क इंक्रीज कर देता है बाय अब्जॉर्बिंग वाटर, जिसकी वजह से सॉफ्टनिंग ऑफ फीसिस हो जाता है और it is easy to pass the stools for the patient who is suffering from constipation. Adequate hydration of patient is to be maintained, क्योंकि अगर पेशेंट ही कम पानी पी रहा है, मोस्टली वो जो ड्रग है वो ड्रग ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया, पेशेंट पानी कम पी रहा है, दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक. Now we have osmotic laxatives. These solutes are not absorbed in intestine. They retain water osmotically in bowel lumen and distend the bowel, thereby increasing peristalsis. अब ऑक्समोटिक लेक्सेटिव्स ऐसी ड्रग्स हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अब पानी को एब्जॉर्ब करके बाउल के अंदर बल्कीनेस आ जाती है, जिसकी वजह से बाउल की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है. जैसे ये मान लीजिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, राइट. इसके बाद हम चलते हैं लैक्टुलोज पे. ये एक सेमी सिंथेटिक डाइसेक्राइड है फ्रुक्टोज का और लैक्टोज का. ये ना तो डाइजेस्ट होता है ना ही एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. It breaks down in colon to form more osmotically active products. It is also used in hepatic coma patient to reduce absorption of anemia from the colon. Then we have some stool softeners like liquid paraffin. It is a petroleum hydrocarbon and inert viscous liquid. ये फीसिस को सॉफ्ट करने के काम आता है और ल्यूब्रिकेट करने के काम आता है. हम इसे यूजुअली पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन के अंदर यूज करते हैं. देन वी हैव डॉक्यूसेट. ये एक एनायनिक डिटर्जेंट है विच सॉफ्टन्स द स्टूल बाय वाटर एक्यूमुलेशन इन इंटेस्टिनल ल्यूमेन एंड इमल्सिफाइज कोलोन कंटेंट. It is indicated in obstetric, habitual, geriatric, pediatric constipation or when straining is to be avoided. Now, next is stimulant laxative. ये जो stimulant laxative है इसमें सबसे पहले हमारे पास है बीजाकोडिल. ये एक stimulant laxative है जिसको हम ओरली देते हैं या रेक्टल सपोजिटरी की तरह भी दे सकते हैं. ये इंक्रीज कर देता है पेरिस्टाल्सिस का एक्शन ऑन म्यूकोजा ऑफ द कॉलॉन, यूजुअली रिजल्टिंग इन सॉफ्ट फॉर्म्ड स्टूल.
It is indicated in all forms of constipation. Senna is not active as such, but after oral intake, when it reaches colon, the bacteria liberate the active form. Active form acts on meningic plexus to increase peristalsis. It also inhibits salt and water absorption in colon. So ये भी एक ड्रग है जिसका नाम है सेना. ये भी हम देते हैं oral intake के through. Then we have anti-diarrheal agents. Diarrhea, actually, what is diarrhea? It is defined as frequent passage of liquid feces with or without ब्लड एंड म्यूकोजा. अगर डायरिया के साथ ब्लड भी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनीवन आप मुझे बता सकते हो अगर ब्लडी डायरिया हो तो? यस एवरीवन, क्या आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में और मुझे बता सकते हैं? एनीवन? डाइसेंट्री. Antidiarrheals are given for symptomatic relief of diarrhea. The first step in treatment of acute diarrhea is replacement of fluid and electrolytes. देखो डायरिया में पानी पानी निकले जा रहा है ना? अब पानी पानी निकल रहा है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? पेशेंट को पानी सबसे ज़्यादा दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं ताकि जो लॉस हो रहा है उससे हम बचा सकें. ठीक है, जो लॉस हो रहा है हम उससे बचा सकें, इसीलिए पेशेंट को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं. इफ ड्यू टू डायरिया देयर इज सिवियर डिहाइड्रेशन, अगर बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो चुका है इस केस में इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन भी करना है. Antidiarrheal drugs are administered for obtaining symptomatic relief in acute diarrhea but have untoward effects. Along the antidiarrheal drugs, antispasmodic are administered in those patients who have diarrhea with abdominal pain. Now, absorbents and bulk forming drugs, they are colloidal bulk forming agent which swell up absorbing water. They modify the consistency and frequency of stools. They are used for functional bowel disease associated with diarrhea. फिर उसके बाद हमारे पास है एंटी मोटिलिटी ड्रग, एंटी सिक्रीटरी ड्रग. लोपेरामाइड जो है ये हम देते हैं. इट इज अ डायरेक्ट एक्शन और इंटेस्टिनल मस्कुलेचर एंड हैविंग अ वीक एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी. इसे लोपेरामाइड को हम एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया की तरह भी दे सकते हैं. देन हमारे पास है डाइफेनॉक्सीलेट. ये एक ओपियोइड है, इसे हम एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया में दे सकते हैं. बट क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ये सीएनएस इफेक्ट्स ओपियोइड के जैसे लाता है. एट्रोपिन इज एडेड विद डाइफेनॉक्सीलेट टू डिस्करेज अब्यूज. सल्फासेलेजिन भी एंटी सिक्रीटरी ड्रग है जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और म्यूकोजल सिक्रीशन को कम करता है. नाउ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी दी जाती हैं डायरिया के अंदर क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डायरिया दे आर बिकॉज ऑफ अ माइक्रोब. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है. कुछ ऐसे रोटा वायरस और फूड पॉइजनिंग दो केस ऐसे हैं जिसमें एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का कोई रोल नहीं है बिकॉज रोटा वायरस वायरस है एक. राइट चलो अब मुझे बताओ इसका आंसर. फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट. fluid and electrolyte. Now we are coming to anti-ulcer drugs. If I talk about anti-ulcer drugs, तो इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में तो दो तरीके के अल्सर होते हैं. एक है ड्यूओडेनल अल्सर और दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर. Duodenal ulcer के patient they have increased capacity to secrete acid and pepsin, increased responsive to stimuli. Gastric ulcer they have low to normal level of gastric acid but never true achlorhydria. दो तरीके के अल्सर हैं, ड्यूडिनल है और गैस्ट्रिक अल्सर है. अब सबसे पहला है प्रोटोन पंप इनहिबिटर. हमारा एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर
एंड हाइड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देखो HCl जो है ये एसिड है, ये जब ज्यादा हो जाएगा तो ये अल्सर करेगा। अब हमें किसी तरीके से HCl को कम करना है, राइट। तो पहला हमारे पास जो है वो है H2 एंटागोनिस्ट। ये हिस्टामीन जो है इनहिबिट करता है इंटरेक्शन विद H2। देखो हिस्टामीन ये हाइड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये H2 ब्लॉकर है। H2 ब्लॉकर जो यूज हम कर रहे हैं, H2 जो हिस्टामीन हमारा जो पाथवे है वो एसिड बनाता है, हम इस ड्रग को देख करके उसको सप्रेस कर देंगे। इसका यूज है डोडिनल अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में, ZES गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स में। देन कम्स प्रोटॉन इन पंप इनहिबिटर, जिसका क्लासिकल एग्जांपल है ओमिप्राजोल, एस ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल। हम सब ने ये ड्रग्स के बारे में सुना। ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन पंप जहां से अपटेक होता है H आयन का, ये उसको इनहिबिट कर देते हैं। इसका बहुत क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है और बहुत इफेक्टिव कंट्रोल करता है ये। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है इंडिकेटेड होते हैं डोडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, रिफ्लक्स, ईसोफेजाइटिस। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, PGE2, PGI2 मेन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस गैस्ट्रिक म्यूकोजा। They decrease acid secretion and improve mucosal defense mechanism. Importance of prostaglandin analog जो है arthritic patient who are on chronic use of NSAID and not responding to H2 receptor antagonist. Now we have ulcer healing drugs. अब अल्सर बन चुका है, उसको हील करने के लिए कार्बेनोक्सोलोन सोडियम, this has been found to be effective in healing both gastric and duodenal ulcer without affecting volume or acidity of gastric juice. अब हमारे पास कुछ अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट हैं। सुक्राल फेट एक अमोनियम साल्ट है, ये अल्सर से प्रोटेक्ट करता है। इट पॉलीमराइजेज एट pH लेस देन 4 टू फॉर्म अ स्टिकी विशियस येलो व्हाइट जेल। ये जेल अल्सर के बेस से एडहेयर हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल बैरियर बनाता है। इट हैज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑल्सो। इट प्रेसिपिटेट्स सरफेस प्रोटीन, ये सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है at ulcer base and act as physical barrier, preventing acid and pepsin and bile from coming in contact with ulcer base. Now we have some antacids. They are the basic compounds to neutralize acid and gastric lumen. They have no effect on gastric acid secretion. They are quantitatively compared in terms of their acid neutralizing capacity, which is defined as quantity of 1 NHCl that can be brought to pH 3.5 in 15 minutes. Role of antacid in treatment of peptic ulcer is primary pain relief. Higher dose given continuously can promote ulcer healing and are superior to H2 blocker. उसके बाद हमारे पास है systemic antacids जैसे sodium carbonate is water soluble and potent neutralizer, but it is not suitable for treatment of peptic ulcer because of risk of ulcer perforation. दिक्कत इसके साथ ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक में जो अल्सर को परफोरेट कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं। ये सॉल्यूबल, ये एब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी में, बस ये स्टमक में जाएंगे, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे और वहाँ पे जो है हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट। आई एम डेफिनेटली श्योर आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई एंटासिड या एस ओमिप्राजोल या मैंने आपको बताया H2 एंटागोनिस्ट जैसे कि बहुत बहुत चलता था, वो ड्रग बैन कर दिया एसेंशियल ड्रग्स में। हम सब ने खुद या फिर हमारे किसी फैमिली में किसी ने ज़रूर लाइफ में कभी ना कभी एंटासिड और ये सारी चीज़ें खाई हैं। दैट इज़ प्रीटी कॉमन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एक वीक और स्लो रिएक्टिंग एंटासिड है। एल्यूमिनियम आयन रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल को एंड डिले करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग व्हिच कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। It can absorb pepsin at pH more than 3 but releases it at lower pH.
फिर उसके बाद हमारे पास है मेगाल्ड्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस वाज अबाउट द जीआई ड्रग्स। हमने जीआई ड्रग्स में सबसे पहले देखा कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट, जिसमें हमने लैक्सेटिव्स देखे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द समरी। समरी में हमने लैक्सेटिव्स हैं, ये ड्रग्स हैं जो प्रमोट करता है इवैक्यूएशन ऑफ बाउल को और कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। देन वी हैव बल्क फॉर्मिंग एजेंट, ये वॉल्यूम और स्टूल को एब्जॉर्ब करते हैं। Then we have anti-motility agent, increases small bowel smooth muscle tone and segmentation activity. Majority of the cases of diarrhea due to non-infective cause, and therefore antimicrobial therapy is not required. H2 antagonists inhibit gastric acid secretion by food. Then we have proton pump inhibitors. फिर हमने पढ़ा prostaglandins and then antacids. So this was about today's discussion, and this was on topic gastrointestinal tract system, GI tract system. So this was about today's discussion. If you have any doubt, you may ask in the chat box. Okay, anyone having any doubt? All right then. Signing off. If you have any doubt, you may ask before I sign off.
Should we treat today's session is over?
So, friends, we are starting with a new chapter. So, there was a bit confusion, and I'll start with Unit 11 from now. I'll start. So, I'm sorry for the inconvenience, I'm sorry for the confusion. So, within 5 minutes, I'll be starting the new chapter. Please join everyone. Please ask your friends to join. So, now I'm talking about local anesthetics. And in this chapter, I'm going to talk about, and in this chapter, I'm going to talk about the local anesthesia. So local anesthetics, all the local anesthetics, they possesses varying degree of water and lipid solubility. Both the properties are essential for local anesthesia. दोनों चीज़ें essential है local anesthesia के लिए, जिसमें हमारा water solubility भी आएगा and lipid solubility भी. Both the properties are essential for local anesthetic. Lipid solubility helps in migration of active drug into the neuronal fiber,
And water solubility is essential to get the drug to the site of action from the site of administration. Local anesthetics can also be classified into two categories based on their chemical structure: ester linked and amide linked. ईस्टर लिंक्ड हमारे पास है जैसे कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, एंड एमाइड लिंक्ड हमारे पास है लीडोकेन, ब्यूपीवाकेन, डिबुकेन, प्रिलोकेन एंड रोपीवाकेन. Local anesthetics block both the generation and conduction of nerve impulse. जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को ब्लॉक कर देगा लोकल एनेस्थीसिया. By depressing higher center, local anesthetics stimulate CNS and produced restlessness, tremor, mental confusion and conversion. In toxic drug doses, जब बहुत ज़्यादा अगर डोज हो जाएगी तो कॉमा, मेंटल कॉमा, डेथ एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है. Cocaine is a powerful stimulant, while procaine and other produce less CNS stimulant effect. Local anesthetics are myocardial depressant and decrease heart rate and amplitude of myocardial contraction. जो ब्यूपीवाकेन है, दिस ड्रग ब्यूपीवाकेन ये ज्यादा कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है. दिस इज मोर कार्डियोटॉक्सिक ड्रग और ये वेंटिकुलर टेकिकार्डिया एंड फिब्रिलेशन ये सब कर सकता है. एक सिर्फ कोकेन की प्रॉपर्टी है ब्लड प्रेशर को रेज कर देता है ड्यू टू sympathomyometic property. Now, the important therapeutic use of local anesthetics are to produce surface anesthesia, spinal anesthesia, infiltration anesthesia, nerve block and conduction block. अगर मैं इंडिविजुअल एजेंट की बात करूं तो मेरे पास पहला है लिग्नोकेन. ये स्टेबलाइज करता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन को by inhibiting ionic fluxes required for initiation and conduction of impulses, thereby affecting local anesthesia action. देखो लिग्नोकेन आपने बहुत सुना होगा. लिग्नोकेन बहुत कॉमनली यूज होता है. Cardiovascular manifestations are usually depressant and are characterized by bradycardia, hypotension, and cardiovascular collapse, which may lead to cardiac arrest. Lignocaine injections are indicated for production of local or regional anesthesia by infiltration techniques such as percussion, injection, peripheral nerve block, spinal or subarachnoid block. Benzocaine ये एक local anesthetic है, belong to ester group. It is poorly absorbed from the intact epidermis and is generally employed for topical anesthesia. फिर हमारे पास है डिबुकेन. ये अनदर डिबुकेन एक और लोकल एनेस्थेटिक है पर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, पर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसीलिए इसको हम सिर्फ सरफेस एनेस्थीसिया की तरह ही यूज करते हैं. ब्यूपीवाकेन ये भी एक पोटेंट एंड लॉन्ग एक्टिंग है एनेस्थीसिया. इसको हम स्पाइनल, इन्फिल्ट्रेशन, एपिड्यूरल और नर्व ब्लॉक्स के लिए यूज करते हैं. फिर हमारे पास है बेनॉक्सीनेट. ये एक सरफेस एनेस्थीसिया है, आई में यूज होता है कॉर्नियल एनेस्थीसिया के लिए. फिर ऑक्सीथाजिन है, पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक है जिसको हम एनेस्थाइजिंग गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए यूज करेंगे along with antacid suppression form जिसको गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में यूज करेंगे. देन वी हैव रोपीवाकेन. इट इज अ न्यूअर लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक. ये कम कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा. इट इज यूज्ड मेनली फॉर नर्व ब्लॉक एंड पोस्ट ऑफ पेन. देन वी हैव स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. इस केस में हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जैसे डी ट्यूबोक्यूरेन. ये एक एल्कलॉइड है जिसको कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोसम प्लांट, ये एक प्लांट का नाम है, इससे इसको लिया जाता है. इनिशियली ये मोटर वीकनेस करता है, फिर उसके बाद फ्लैसिड पैरालिसिस एंड the paralysis occurs in following order. Example, paralysis of finger, toes, eyes, ear. इन सब की paralysis करता है ये. Higher doses में डी ट्यूबोक्यूरेन blockade कर सकता है autonomic ganglion का. Then we have pencuronium, एक synthetic steroidal compound है and
ये डी ट्यूबोक्यूरोन से 5 गुना ज़्यादा पोटेंट है। एक वेरिक्यूरोनम है, ये पैनक्यूरोनियम का कंजेनर है पर शॉर्टर ड्यूरेक्शन है इसका। देन एटाक्यूरियम, देन सक्सिनाइल choline is a structural analog of acetyl choline. The therapeutic uses of periphery acting muscle are as follows: as an adjunct to general anesthesia, especially in major surgical procedure. Succinyl choline is used for surgical procedures of brief duration. सक्सेनाइल कोलिन को हम कन्वर्जन्स के दौरान कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जब हम ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। आपने सुना होगा ईसीटी के बारे में। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो आपने ये ईसीटी अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज वी हैव गुड ड्रग्स टू कंट्रोल द वेरियस साइकेट्रिक सिम्टम्स। पर पुराने ज़माने में ईसीटी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। एंड यू मस्ट हैव सीन इन वेरियस मूवीज ऑल्सो। मूवीज़ के अंदर भी वो ना ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट जो दे रहे होते थे, दैट इज़ basically this only, ECT, electroconvulsive therapy. Now centrally acting muscle relaxant में हमारे पास है मिफेंसिन, क्लोरजोक्सासोन, मीथोकार्बामोल, कैरिसोप्रोडोल और फेनाड्रिन, टिनिडा, टिजानिडिन। ये सारी जो हमारी ड्रग्स हैं, ये these agents reduce skeletal muscle tone by selective action on cerebrospinal axis without affecting consciousness. पहली ड्रग थी मेफेनिसिन मसल रिलैक्सेंट के तौर पे, बट इसका बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स थे, इसीलिए अब इसको नहीं यूज़ करते। क्लोरजोक्सासोन मेफेनेसिन के जैसी ही है, ये पेनफुल मसल स्केलेटल स्पैज्म करती है, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरास्टामोल एंड डाइक्लोफेनेक। एंड मीथोकार्बामोल ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन करती है पॉलीसाइनेप्टिक स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक करके। एंड कैरिसोप्रोडोल ये मसल स्पाज्म के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इसका एंटीपायरेटिक और वीक एंटी एड्रेनर्जिक इफेक्ट भी है। इफ आई टॉक अबाउट टिजानिडिन, ये स्पास्टिसिटी ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्रॉनिक माइलोपैथी, डीजनरेटिव डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन सारी बीमारियों में इसको हम यूज करते हैं। देन वी हैव बेक्लोफेन। Baclofen is a powerful neuronal depressant. It reduces the relax of excitatory transmitter and anti-nociceptive in animal studies. इसको हम mainly multiple sclerosis की spasticity में use करते हैं. So now I am coming to the next unit, that is chemotherapy 1. This unit is very important because in this unit we'll be talking about antibiotics. Very useful, very powerful antibiotics in day-to-day practice. We use it like penicillin, sulfonamide, cephalosporin. Very important chapter. Now, if I talk about the classification, we have antibacterial drugs. In this, we use the antibacterial drugs against the bacteria. Then we have antiprotozoal. Here we use it for the protozoas like antamoeba, malaria, falciparum. Then we have antifungal against the fungus. Then we have antihelminths against the worms and anti-cancer drugs. So the history dates back to 1928, where Sir Alexander Fleming found that a diffusible substance was elaborated by Penicillium notatum, a fungus, which prevented the growth of surrounding bacterial colonies in culture plate. He named this as a penicillin, but this discovery remained a specific curiosity for more than a decade. This work was followed by the Chain, Falk, and Fleury, who established the efficacy of penicillin in 1941 and 1945. Then they were awarded Nobel Prize. The microbial agents are either bactericidal or bacteriostatic. Bactericidal means those who kill the bacteria,
Bacteriostatic means those who do not allow the further multiplication of bacteria. If I talk about penicillin, मैंने आपको ऑलरेडी बताया पेनिसिलिन को हमने पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट टाइम इसको हमने इजाद किया था. Penicillin consists of beta-lactam ring, which is essential for its antibacterial activity. The bacterial cell wall is a rigid outer layer that completely surrounds the cytoplasmic membrane. Now, we have two types of penicillin. One is the penicillinase sensitive penicillin. That means there is an enzyme penicillinase that can inhibit penicillin, right? So if this penicillin is sensitive to this, we call it penicillinase sensitive penicillin. First is benzyl penicillin. It is the most potent beta-lactam antibiotic and inhibits the growth of susceptible microorganism in vitro in the lowest concentration and available in water, sodium and potassium salt. Penicillin is effective against gram-positive and negative cocci and some gram-positive bacilli. The main therapeutic use of penicillin are streptococcal infection, staphylococcal, meningococcal infection, pneumococcal, gonococcal, syphilis. Penicillin is the drug of choice in treatment of syphilis, in the treatment of actinomycosis and anthrax, in the treatment of diphtheria, tetanus, and gas gangrene. Then we have semi-synthetic penicillins. Semi-synthetic penicillins are produced by combining the specific side chains in place of benzyl side chain. They have been produced to overcome the shortcomings of benzyl penicillin like poor bioavailability, susceptibility to penicillinase, narrow spectrum of activity. फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन एक एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, सिमिलर है बट लेस इफेक्टिव है. Then we have penicillin resistant penicillin. It is resistant to degradation by penicillinase. Mainly, it exhibits activity against gram-positive microorganism and is useful against penicillinase producing Staph aureus. We have cloxacillin. It's a weaker antibacterial activity than benzyl penicillin. It is devoid of any serious side effect but can cause hypersensitivity reaction. Then we have broad spectrum penicillin, ampicillin, amoxicillin. These two are broad spectrum penicillins. And if I talk about ampicillin, it is more effective than benzyl penicillin. It is used in infection caused by susceptible gram positive and gram negative organisms. Amoxicillin is a semisynthetic penicillin, a close congener of ampicillin. We use it. Amoxicillin is used in with claviculin potassium, claviculate potassium. आपने सुना होगा इसके बारे में amoxiclave जो हम देते हैं. This amoxi is amoxicillin. The clave is this agent. Beta lactamase inhibitors. And here we have clavulanic acid. There is a progressive inhibitor of wide variety of beta lactamases. It is obtained from Streptomyces clavuligerus. It has no antibacterial activity on its own. It is used with amoxicillin in various infections. Sulbactam is also a drug similar to this one, and this also protect the penicillin from the beta lactamase. Anti-pseudomonal penicillin, we have carbenicillin. This is primarily indicated for serious infection like pseudomonas. Then we have piperacillin. जब कोई एंटीबायोटिक क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम ना करे तो हम देते हैं पिपरासेलिन के साथ टेजोबेक्टम. This piperacillin is a type of penicillin also. This is indicated in systematic and local infections, gynecological infections, UTI, RTI. Then we have ticarcillin. ये broad spectrum है.
पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट. देन कमिंग टू सल्फोनामाइड. Chemically, all sulfonamides may be considered to be derivative of sulfanilamide. Sulfonamides were the first antimicrobial agents effective against pyogenic bacterial infection and such as strep, स्टेफाइलो, न्यूमो, गोनो, इन सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट आप इसको दे सकते हो. प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो यूटीआई में, डाइसेंट्री में, मैंने आपको अभी पिछली क्लास में बताया डाइसेंट्री क्या है, ब्लडी स्टूल्स, ट्रेकोमा, शेंक्रोइड, इन सारी बीमारियों में हम सल्फोनामाइड्स को यूज कर सकते हैं. देन वी हैव ट्राइमिथोप्रिम. Trimethoprim is related to anti-malarial drug pyrimethamine, which selectively inhibits bacterial dihydrofolate reductase. हम इसको acute cystitis, UTI में, बैक्टीरियल डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इन सब में यूज करते हैं. Now coming to cephalosporins. Cephalosporins, excuse me, they are important bactericidal broad spectrum beta lactams. Cephalosporins बहुत जनरेशन के हैं, लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन की तो सिफालेक्सिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रॉक्सिल, ये तीन ड्रग्स हमारी फर्स्ट जनरेशन की हैं. सेकेंड जनरेशन में हमारे पास सेफ्यूरोक्सिन, सिफाक्लोर, सेफ्टाजिडिम एंड सिफोक्सिटिन, ये चार ड्रग्स सेकेंड जनरेशन की हैं. सेफ्ट्रायोक्सोन सबसे ज्यादा आपने सुना होगा, सिफोटेक्सिम, सिफिक्सिंग, दीज थ्री आर थर्ड जनरेशन, एंड सेफेपिम एंड सेफिरोम is our fourth generation. Then we have quinolones. Nalidixic acid है हमारा पहला quinolone. And then we have ciprofloxacin, norfloxacin, pefloxa, sparfloxa, ufloxa. देखिए ufloxacin जो है ये ब्रोंकाइटिस और ईएनटी में यूज होता है. ऑल्सो हम इसको गोनोरिया, यूटीआई, इकोलाई के द्वारा जो किया जाता है उसमें भी यूज कर सकते हैं. जो सिप्रोफ्लॉक्स है ये फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनिन है, ये ब्रॉड रेंज है इसकी, इसे हम बहुत सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में भी यूज कर सकते हैं. देन वी हैव सम मैक्रोलाइड्स जिसमें आता है एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन. ये तीन ड्रग्स हमारी जो हैं दैट इज रिलेटेड टू एरिथ्रोमाइसिन, that is related to erythromycin. Now, if I talk about the erythromycin, ये हमारी फर्स्ट मैक्रोलाइटिक ड्रग है. इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं आपकी, इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और इन सारी डिजीजेस में हम इसको यूज करते हैं. नाउ आफ्टर मैक्रोलाइड्स हमारे पास ओके, azithromycin is also a very important macrolide. ये longest acting member है इस ग्रुप का. And some polypeptide antibiotics like polymyxin B, bezitracin, tyrothricin. Now coming to clindamycin, ये clindamycin, this is the most of it inhibits most of gram-positive cocci, pneumococci. It is used in treatment of severe anaerobic infection caused by bacteroids. Lincomycin, vancomycin. These are three miscellaneous antibiotics. Then we have anti-protozoal, anti-helminthic agents. Anti-amoeba, if I talk about anti-amoeba, then we have, if I talk about anti-amoeba, then we have imidazole, जिसके अंदर आता है आपका metronidazole, tinidazole, secnidazole. ये सारे जो ड्रग ऑफ चॉइस है मेट्रोनिडाजोल फॉर ऑल काइंड ऑफ एमीबिक इन्फेक्शन जैसे ट्राइकोमोनास, वेजिनाइटिस एंड जियार्डियासिस, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, एच पाइलोरी, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं इसको. देन वी हैव टिनिडाजोल एंड सेक्निडाजोल. उसके बाद क्यूनोलॉन डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं, वी हैव क्लोरक्यूनिन,
क्लिनोल डेरिवेटिव्स के लिए हमारे पास है क्लोरक्यूनिन। एंड ये क्लोरक्यूनिन जो है, इसको हम यूज करते हैं टू किल द ट्रोफोजाइट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। It is used in treatment of hepatic amoebiasis. Then we have emmentin derivative, जो E. coli के लिए हम यूज करते हैं. We have diloxanide furanate. This is very effective for luminal amoebicide, जो हमारा GI ट्रैक्ट का ल्यूमन है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं. We have furazolidone. It is indicated in bacterial enteritis, diarrhea, giardiasis, bacterial dysentery. Then we have leishmaniasis. Very important disease in India, काला आजार, leishmaniasis. इसके लिए हमें एम्फोटेरिसिन बी और कीटोकोनाजोल यूज करते हैं. And then we have pentamidin, एक aromatic diaminidin. This is used for treatment of pneumocystis and African trypanosomiasis. Then we have sodium stibogluconate. For trypanosomiasis, we have suramin and melarsoprol. Then we have trichomonias vaginalis के लिए. The drugs which are used are metronidazole, tinidazole, secnidazole. So now coming to antihelminth, we have mebendazole. में बेंडाजोल एक वाइड स्पेक्ट्रम है इसका. एंड ये बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होने वाला है. 90% जो है ड्रग्स का, ये इस ड्रग का, इसकी ना आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होता है. और 90% ड्रग जो है फीसिस में एज इट इज बाहर आ जाता है. देन वी हैव लीवामिसोल. ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है लीवामिसोल. बहुत इफेक्टिव है एस्कैरियोसिस के लिए एंड एनक्लाइस्टोमियासिस के लिए. वी हैव निक्लोसामाइड. वी हैव पिप्राजिन, पैरेंटल पाउमेट, डाइइथाइल कार्बामजीन, DEC. फाइलेरियोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. एंड देन वी हैव आइवरमेक्टिन. It is the only orally active drug against ectoparasites. Ivermectin भी हम लोग फाइलेरियासिस के प्रिवेंशन में यूज करते हैं. Praziquintal. All of these drugs are
कंचन कितनी देर से नहीं चल रही है काउंसलिंग? तान्या, सुन पा रहे हैं मुझे? For last 15 minutes. तो डिस्कनेक्ट हो गया था है? तान्या, सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी सर। आज का सेशन तो कंप्लीट कर दिया ना डॉक्टर साहब ने? इससे पहले भी डिस्कनेक्ट हुआ था तो उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था तो हमें लगा शायद फिर से ज्वाइन करना है। अच्छा, नहीं बेटा, आज का कंप्लीट है, कल भी लेंगे। अच्छा सर, 1 मिनट, क्वेश्चन था सर एक। जी। सर जो असाइनमेंट है ना सर, हाँ हाँ। जैसे हमारा मतलब जो एग्जाम है वो तो जुलाई में होंगे ना, हाँ जी। तो फिर असाइनमेंट हमें मार्च से पहले देना है या 15 से पहले, मतलब आज? मार्च और अप्रैल का टाइम पीरियड रहेगा। हाँ जी सर, जो जैसे नेट पे आ रहा है वो अपडेटेड है ना सर, जो असाइनमेंट है उसमें जुलाई 23 आ रहा है लिखा हुआ। हाँ ठीक है, वही है, जुलाई 23 की है। नहीं, जुलाई 23 की नहीं आएगी आपकी। तो वहाँ पे सर जुलाई 23 आ रहा है ना, एक मिनट। 23। आपका जो हेलो सर, एडमिशन सर है, एक्सक्यूज आपका मी सर। आपका जुलाई 23 का ही एडमिशन है, ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, तो हेलो वही एक्सक्यूज मी सर। और जून में 24 को एग्जाम होंगे। हाँ बोलिए कुछ। सर उस पे असाइनमेंट के पेपर, क्वेश्चन पेपर पे सबमिटेड डेट लास्ट 4 सब्जेक्ट पे 1 से लेकर 4 तक 15 जनवरी दिखा रहा है।